ऑलराइट गाइस, आज हम वापस आ गए हैं फिर से बायोम्यूटेंट में। और स्टोरी अब हम इससे आगे बढ़ाते हैं। गेम तो वैसे बड़ी प्यारी सी है, अब जाके उसका थोड़ा म्यूज़िक मेरे को अच्छा लगा है, वैसे सही बताऊँ तो। पहले वाला म्यूज़िक थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और थोड़ी सी बीच में शुरुआत में थोड़ी सी स्लो है आई थिंक सो। मतलब उसमें जो इसके अंदर हमारे पास जो बंदा होता है, जो नरेटर होता है, वो थोड़ा धीरे धीरे बोलता है, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल राइट है। थोड़ी गेम अलग सी है और बहुत सी चीज़ें गेम में। और हमारी अब पता चलेगा कि वो क्या हुआ। मतलब बचपन में हम एक दद्दू से मिले थे जो व्हील चेयर में थे, अब दद्दू से मिले हैं। दद्दू अब हमें पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, तो लेट्स गो देखते हैं। और गेम देखने में अच्छी है, मतलब काफ़ी सुंदर है गेम। यहाँ पे तो अच्छी लग रही है, वहाँ तो हम गेम में घूम रहे थे तब से। ओ हो स्टाइलिश। Asks if you are tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Mooma knows you are here. I don't think she's scared. I hope I told her. Sounds like he thinks she does, despite your heart growing dark. There's nothing as powerful as a Mooma's love. Mooma's love. भाई गाना गा रहा है, ये कैसे ट्रांसलेट कर He पा रहा है इसको? understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. सब बातें मेरे ऊपर से जा रही है। Potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. Ooh, okay. I don't believe in magic. No, no, potato people. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. ये बंदे की पूंछ चूहे वाली है और इसकी शक्ल थोड़ी उसकी जैसी है। एक स्क्विरल होती है ना, नहीं स्क्विरल नहीं, मैं इस जानवर को बता नहीं पा रहा हूँ। रकून जैसा होता है थोड़ा सा वो। जल्दी कैसे दौड़ेगा ये? ओहो, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है। जो मैंने कलर चूज़ किया है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कलर नियॉन सा। ओके गाइज, मैं इसका फील्ड ऑफ व्यू चेंज करके देख रहा था कि थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू सही हो जाए अब, क्योंकि पहले थोड़ी सी पास से लिख रही थी बहुत ज़्यादा। रफल से क्या करना है यहाँ पर मेरे को? भाई आ गया गायक। You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Will it grow stronger enough? तो वो ट्री ऑफ लाइट है, जो ट्री और लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ, Only time will tell. वो ट्री ऑफ At लाइफ है least जो his पहले intention is हमें to दिखाया था dedicate उन्होंने, his जहाँ पर ये life खड़ा to था। it. He has the feeling the fate of the world depends on it. ओह, ये दद्दू वही है क्या जो व्हील चेयर पे बैठा था? ये दद्दू ही है क्या? Long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. तो हमें इसको पकड़ना है नेट से। नो नो को, नो नो नेट, नो नो का है, नो नो, नो नो बेटा आ जाओ जल्दी। You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of Nono out there that need to be guided to the roots of the Pensai tree.
Where can I find them? नहीं कितने चाहिए हमें? Oh, it'll need a continuous flux of ki over the 12 months to come, so countless, he'd say. One day, he hopes the tree will have grown यहाँ पर जो tall sound आ enough रही to है वो sustain बिल्कुल the world. जापानीज साउंड जैसी आ रही है, जैसे जापान. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. ओके अब मेरे को बाहर जाना है. मर्ज दी नानो विद दी. अच्छा हमने जो नानो पकड़ा है उसको मर्ज करना है इसके अंदर. क्या ये मतलब ट्री ऑफ लाइफ की शायद पावर बढ़ाता है या फिर उसमें काई एनर्जी मिलती है उससे. कितना छोटा दिखाई दे रहा है ये. ये था ट्री ऑफ लाइफ. ये बढ़ गया नानो डाल के. नानो क्या खाद है क्या? ये Now खुश हो that गया. you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, ऐसा लग रहा है कि you'll ना make nurturing the pencil ये नहाते into a tree शावर of में life, गा रहा है. a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. क्या? You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. He only cares about Kung Fu action. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. ये दद्दू यही था, आई थिंक सो. क्या स्टाइलिश दद्दू हुआ करते थे ना पहले. और अब बेचारे के पास एक टांग टूटी हुई है, गाना भी नहीं गा पा रहा है. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. अब से ढंग से बोलना आ गया लेकिन. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World-Eaters arrived. World-Eaters. World-Eaters कौन है? The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the World-Eater's DNA into overdrive. तो अभी म्यूटेशन होने बाकी है. His friend Gizmo is working on a Mecton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Tree of Life. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World-Eaters. There's one at the end वो of शायद each गेम का पूरा मैप है और पूरे मैप के बीच में एक है ट्री ऑफ लाइफ. But he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved.
His friends have prepared something specific for each world eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Googlide are almost ready to ride. अब हमें वर्ल्ड Regardless, you'll ईटर्स meet को again हटाना है once फिर. you've played your part in the tribe war and the situation with the world eaters. तो नेट दे रहे हैं. लूट चांस प्लस 3%. अरे तो अब नेट वूट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ऐसे ही पकड़ लेंगे हम मुर्गी को. ओह अच्छा हुआ हमें क्रोबार मिल गया, तो हम खोलते कैसे Quickest way इसको. out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. इसको तो अब थोड़ी सी स्टोरी क्लियर आउट हुई है कि हो क्या रहा है और इस गेम में करना क्या है. तो हमें वर्ल्ड को बचाना है और वो होगा ट्री ऑफ लाइफ से. तो हमें अल्टीमेटली ट्री ऑफ लाइफ को बचाना है. Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the world eaters. ओके गाइस, पहली वीडियो में हम गेम के स्टार्टिंग लाइन पर भी पहुंचे. अब जाके गेम स्टार्ट हुई है. नाउ दे आर शोइंग क्रेडिट्स. इसने क्या क्या काम किया है. A signpost maps it out for the cartographically challenged. मे भी हम इससे फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं. अच्छा क्वेस्ट है, मेन क्वेस्ट. Let's see. A signpost are found near the location of the interest all around the world. You will unlock the signpost when देखिए हर signpost पे जिस पे इसने अपनी अपनी छाप छोड़ी होगी ना. You can fast travel to the signpost you unlock. हाँ लेकिन इसे छाप छोड़नी पड़ेगी वहाँ पर. ये भी अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है. तो ये है पूरा मैप और यहाँ पर है ये रहा ट्री और इससे रूट्स जा रही है और हमें आई थिंक से गांव वगैरह है और इन गांव की हेल्प करनी है. और बॉस वॉस होगा मे भी वहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है देखने से. ये बिल्ली सी बैठी है यहाँ, पता नहीं. लेट्स गो एस्केप. लेट्स गो. द फर्स्ट स्टेप, वेंचर आउट इनटू द वर्ल्ड. ओके ये पाइपलाइन जा रही है, मुझे वो देखनी है. ओह ये है ना पहला बॉस. कितना कितना खतरनाक लग रहा है वो. कितना तगड़ा लग रहा है इसका फर. World eater that chewed off out of date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have ओ made आउट their ऑफ डेट का marks on our world over पैर time. इसने काटा था. उस That's दद्दू not का the पैर. first nor the last village it'll leave in its wake. उस दद्दू का पैर इसने काटा हुआ था, तभी दद्दू का पैर चला गया. खतरनाक था वो कतई. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. ये अलग लैंग्वेज बोल रहा है. He's नहीं heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. Your inner balance is two halves that complete a wholeness that flow through all the things. At time you will able to manifest your inner balance or the deed. अब मेरे डायलॉग चॉइसेस पे डिपेंड करेगा कि शायद मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ. ऐसा होने वाला है शायद. Few are those who always act in the same manner, and our wholeness is the sum of the choices we made and the actions are take. The balance of your choice actions create your aura score, which affect the dialogues with other character. तो अगर मैंने किसी के साथ बुरा बात करी है तो मैं शायद दूसरे कैरेक्टर के साथ उससे बुरा भी बोलूँगा मैं. ऐसा होगा शायद. एक ऑरा पॉइंट है. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart.
Interacting with the captives and PSI shrines will award you with the PSI points that you can use to unlock Psionic power. Powers can only be unlocked once you have reached the required dark and light inner balance. हाँ तो हमारा बैलेंस अभी शायद मैं लाइट पे चल रहा हूँ क्योंकि हमने शुरुआत में लाइट यूज़ किया था. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. I will leave you to the fate. अब मैं सोच रहा हूँ अपन ना बुरे बनते हैं, अच्छे सब बनते हैं यार. Let me help. नहीं मैं नहीं करूँगा. I will leave you to the He can't understand why you'd do such a thing. He won't make it out of here on his own. Good work, clever cogs. Let me guide you into the dark. डार्क बनते हैं, थोड़ा फन है उसमें. The dark, that sounds bad. I always like the darkness. Seriously? I always thought better of you than that. And you were wrong. There's always more dark than light. There's still time to turn back. They're already heading down my road. चुप. पिछली बार उसको पीटा था इसने, वाइट ने. PSI point unlock. You gained a PSI point. Use it to unlock powers in mutation menu. Some powers are locked by the aura score, meaning that your PSI points can only unlock power of the same color as your current aura. Okay, तो कितना कितना cool दिख रहा था वो. There's out of date again. He must have missed something important. Out of date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. तो अगर मैं बुरा बन जाता हूँ तो फिर भी गेम में The मैं Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. हाँ तो अब हमें यहाँ पर जाना है इस ट्राइब के पास. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Out of date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. ओह तो मुझे इनमें भी चॉइस करनी है. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Have tribes engage the World Eaters. World Myriad Eaters. is convinced that defeating the World Eaters is the only way the world can be saved, but they've been forced to focus on their rivalry with the Jagni tribe. Out of date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Your current and the started quests are shown in the journals. Talk to the Jigni और अच्छा या तो मैं इस वाली ट्रैप पे आ सकता हूँ, इस वाली ट्रैप पे आ सकता हूँ. इनका मानना है कि हमें वर्ल्ड ईटर्स को मारना है. इनका मानना शायद दूसरा है कि मतलब शायद हम आपस में लड़ेंगे और फिर वर्ल्ड ईटर्स को मारेंगे. मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वाले बुरे हैं तो अपन इधर देंगे. The tribe war.
Tribes stand in the opposite. Some believe that the white leader need to be vanished and the other of the tree can be saved, whereas some believe that the impending doom should be embraced and that's the only way to forward in the destruction of the tree of life. It's up to you to unite. हाँ तो अगर मैं ओके तो अब हम पूरे वाले के पास जाएंगे. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? ओह अब इसमें भी मेरे को चॉइस करना है कि या तो मैं ब्रिज से जाऊं या फिर मैं इधर से जाऊं. वैसे मेरे को उस साइड जाना है तो मैं उस साइड क्यों जाऊंगा. हम मोटर ब्रिज से जाएंगे ना. It's a bridge. Just get over it. ये मुझे ऐसी अच्छी नहीं लगी. मुझे लगता है इसमें कुछ होने वाला है. अब इनमें से अच्छे वाले तो ये लोग हैं शायद. हाँ Slice and dice. ये लेवल 3 का बंदा है. ओके एनिमीज तो टफ हो रहे हैं. मुझे तो अच्छे से करना नहीं आया अभी तक से भी. ये कैसे मेरे को वो कॉम्बो चलाना है एक साथ. मैं गलत जगह गिर देता हूँ कॉम्बो. बेचारे के लिए रखे सबने एक साथ 4 बंदे मार रहे हैं एक अकेले को. ओ वहाँ पर कोई शहर है शायद वो. Muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. ओह मैं इसके अंदर जा सकता हूँ क्या. इस डब्बे में क्या मिलेगा. अच्छा हीलिंग की मुझे अभी तक से ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे. और शायद में भी जब बड़े बॉस आएंगे जैसे वो फर वाला तीन मुंह वाली जो वो था ना एक बड़ा सा जानवर था. That's the Jagni tribe's fort. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war or part of the problem. अब मुझे यहाँ पर अपनी छाप छोड़नी है. आहा मजा आ गया. Let's see. बहुत हल्का महसूस हो रहा. तो ये एक ट्राइब है ये एक ट्राइब है. इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है. पता नहीं अब देखते हैं क्या होना है. जो बुरे लगे मैं उनकी तरफ आया हूँ. Says they're wary of strangers. They're at war. I need few minutes with this Tifu. I'm out of here. हाँ. The Sifu's door is always open for newcomers, but he cautions you. They'll expect you to behave, or you'll have to face the consequences. अच्छा मतलब मैं मदद करने आऊँ और मतलब मेरे को ही धमकियाँ दी जा रही है. भलाई का जमाना ही नहीं है. ओह अच्छा लग रहा है. ये चूहा आधे जहाँ लोग चूहे जैसे क्यों उसमें. The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes, as the only way they can guarantee peace is through supremacy. The Sifu is determined to let the World-Eaters destroy the Tree of Life, as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew. ये है वर्ल्ड ईटर. अच्छा तो ये बड़े-बड़े He जो welcomes you to the Jagni fort and introduces himself as the tribe's Sifu. कितनी प्यारी आवाज है The उसकी. news of a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 preceded you. ग्रेट वॉल क्या है. The wall that separates them from बिल्कुल the ये वही है other जो अभी side, दिखाया the उन्होंने. wasteland you came from. He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland itself. जिसकी He आवाज सुनकर understands that हंसी आ रही है. sometimes we need to lose ourselves
to find ourselves. But he's glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. नहीं नहीं, अपन बिल्कुल काइंड हार्ट नहीं है, हमने एक बंदे को भी मारा. Sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. ये मोमा की बात वहाँ पर भी हुई थी. Invented Wang Fu. Originally, it was based on unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. Nunchaku. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land and there are rivals in all directions. Jagni doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. Says there is some darkness in the best of us, even you, and suggests you embrace that side of you and help them vanquish the tribes and let the World-Eaters destroy the Tree of Life. Yes, I will join the Jagni. No, I wouldn't embrace darkness. हाँ, तो हम बिल्कुल सही जगह आए हैं. तो अब हमारा ये है कि वर्ल्ड ईटर्स को हम ट्री ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय करने देंगे. अलाइव विद जगनी, दे वांट टू वैनिश द ट्राइब्स एंड लेट द वर्ल्ड ईटर डिस्ट्रॉय द ट्री ऑफ लाइफ. वार्निंग, सेट्स द गेम एंड गोल टू डिस्ट्रॉय द ट्री ऑफ लाइफ, चूजिंग डेस्टिनी फॉर द डिफरेंट. तो अब हमने पूरे गेम का चेंज ही कर दिया. हम बिल्कुल गंदे रास्ते पे जाएंगे. इसमें क्या होगा, डिस्ट्रॉय ट्री ऑफ लाइफ होगा, हम ट्री ऑफ लाइफ को तोड़ देंगे. चूजिंग डेस्टिनी फॉर द डेफिनेटिव, डिफीटेड राइवल्स, टीफू इज लिमिटेड. मेरे हिसाब से मे बी, शायद हो सकता है कि जो गेम के डेवलपर्स हैं उन्होंने डार्कनेस के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खोली हो जितनी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने उसके लिए खोल रखी है. लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत कम लोग होते हैं जो, वैसे भी सब लोग ऐसे ही करते हैं, वो डार्कनेस नहीं लेते. सब जो गेम के साथ होता है उसके साथ चलते रहता है. तो वो इसमें थोड़ा मज़ा आएगा. लेट्स जॉइन. शायद हो सकता है कि उन्होंने इसमें. But it seems your mind took control of that big heart of yours. That's a sign of strength. हो सकता है इन्होंने शायद इसके लिए ज़्यादा स्टोरी ना बनाई हो डार्कनेस के लिए, लेकिन कोई बात नहीं. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can vanquish the other tribes. Vanquish. The one he wants to deal with first is the Myriad tribe. What is vanquish? Vanquish. The Jagni's destiny is to do what others are too afraid to do. To vanquish past and future disillusions of unity and take control of our destiny. Uniting the tribes and saving the Tree of Life won't change anything. हमें डंडा मिल रहा है क्या? नहीं, अच्छा. वे फ्रेंडशिप के लिए शेक हैंड्स कर रहे हैं. End to the war before war puts an end to them. It'll cost bruises and broken bone. But they refuse to be the victim here. We need to end this quickly. They have no intention of letting this drag out, or they'll run the risk of teaching the enemy their art of war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. ये इलाका हमारे पास है अभी, जिस हमने ट्राइब से वो करी है, और इस इलाके को हमें लेना है. ओह, ये तो. You'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, ये दूसरी वाली ट्राइब है. and the tribe weapon now, is if you defeat him, and that will never happen. Yeah, bro. ये गेम में. Even if you see the world differently, you must hit them as soon and as hard as you can. The outcome of this war is up to you. ये गेम में बहुत सारी चीजें हैं. Nice. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've conquered the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu for control of their territory, tribe weapon, and kin.
ट्राई वेपन क्या होता है? Your Muma taught each disciple a weapon. She never intended it for hunting nor war, but lately the art of defense has been shadowed by relentless attack. Seeing you brings back his memories of the old village. Jackney doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Anyway, you'll pass your old village on your way to the first rival outpost, but we've got no time to be sentimental. War doesn't wait. It's always the little things you remember, and with you it's pretty much the only thing he recalls, that you were little. ओह, आखिरकार। अरे अच्छा, ये लाइट दे रहा है। ओह, ये वो छोटा सा टेढ़ा है जो गेम की शुरुआत में आया था, जो ऐसी आवाज से कर रहा था, इलेक्ट्रिकल। एग्जिट द जगनी फोर्ट, याग्नी फोर्ट, याग्नी। इनका फोर्ट भी काफी बड़ा है, पता? ये इनका गांव है, छोटा सा। इनके गांव में लोग नहीं रहते क्या? तो यह क्या अंदर? ओह, ये तो खिड़की नहीं, ये तो पेंट सा रखा। अच्छा, ये रहा। Says your piece of junk would be... Understands you have other places you need. कुछ नहीं, मैं कुछ इंटरेक्ट करने का फायदा नहीं है यहाँ पर। पास टू द फॉरेस्ट क्लियर। अब हम एन अलायंस, अब हम शायद इनको साबित करने के लिए हम शायद उनका कोई आउटपोस्ट लेकर आएंगे, मे बी शायद ऐसे होना है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। गेम की स्टोरी थोड़ी सी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, इसमें थोड़ा सा पता चला या, और गेम अब तक की काफ़ी अच्छी है, ग्राफिक्स वाइज अच्छी है, स्टोरी वाइज ठीक है, अच्छी है, गाइस अलग है गेम। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।